I'm delighted and I'm very grateful that you have invited me on this platform to speak about my testimony and about what God has done in my life. मैं उर्दू में भी बात करूंगी और इंग्लिश में भी, जैसे जैसे मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने रहनुमाई दी अपने पाक रूह के जरिए. I'm willing to do that. आपसे मैंने दरख्वास्त ये करनी है कि अगर जब मैं हवाले के लिए कहूँ तो प्लीज़ आप अपनी बाइबल से इंग्लिश में या हिंदी में या उर्दू में अगर आप बात करना चाहें, उसमें से पढ़ना चाहें, तो आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए इस सिलसिले में, ताकि मेरी फ्लो में कुछ रुकावट ना हो. आइए हम दुआ करते हैं. कदूसियत से भरे हुए खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं आज के इस मुबारक मौका के लिए जो तूने हमें बख्श दिया. हम तेरी आज मिन्नत करते हैं खुदावंद कदूस कि तू हमारे रहनुमाई में मदद फरमा, हमारी रहनुमाई कर. जो कलाम तेरी जानिब से है वो ही खुदावंद अपने तेरे बच्चों तक पहुंचे. खुदावंद कदूस एक एक को छू ले, पाक को साफ कर दे, ताकि तेरे कलाम का बीज दिलों में गहराई तक पहुंच जाए खुदावंद खुदा. और हर एक की हिफाजत के लिए मैं तेरे पाक लोगों में एक एक को छुपा देती हूँ, अपने आप को छुपा देती हूँ खुदावंद कदूस, क्योंकि तू जानता है कि तेरे ही नाम से दुश्मन के सारे मंसूबे फेल होते हैं और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तेरे सामने खड़ी हो सके. तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरे नाम में हम झुकते हैं, तुझी को सिजदा करते हैं, क्योंकि सिर्फ तू ही सिजदा के लायक है. तेरे नाम की सिताइश, तेरे नाम की जय जयकार हो. तेरी हम्दो सना, तेरी सिताइश अब्दुल्लाबाद हमारी जिंदगियों से, हमारे लबों से जारी और सारी रहे. खुदावंद कदूस, तेरे नाम को जलाल देते हुए हम तेरा शुक्र करते हैं. We give you all the glory and honor, Jesus, God Almighty, and we give all the honor to you and to your word that speaks to us, and the Holy Spirit that leads us and guides us into the right place to understand the word in a right way, as you have anointed us and appointed us to receive and to scatter and to sow, Lord Almighty. We give all the honor to you because it's all about you. There is a power in the name of Jesus, and there is a power in the blood of Jesus Christ, and we commend ourselves into that power to receive the word that you have given us, the manna, the food to our soul and spirit and mind and heart, Lord Almighty. So we give all the glory and honor unto your holy name, and we surrender to you. We commend ourselves into your precious hands, because there is no other name higher than the name of Jesus Christ. We love you and give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. First of all, I would like to read some verses from the Psalm 18. अगर कोई भाई या बहन पढ़ दीजिए. ज़बूर 18 की कुछ आयत हैं जो मैं चाहूंगी कि आप पढ़ दीजिए मेरे लिए. 6 आयत तक, पहली आयत से 6 आयत तक. हालेलुया. ऐ खुदावन, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ. खुदावन मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है. मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज. मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा. यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा. मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सलाबों ने मुझे डराया. पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थी, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे. अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की, और उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी, और मेरी फरियाद जो उसके हजूर थी उसके कान में पहुंची. आमीन. आमीन. शुक्रिया बहना. ये आयत मेरे लिए उस वक्त से हैं जब से मैं खुदावंद यीशु मसीह में आई हूँ. मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे
مجھے یہ زندگی عطا کی ہے, یہ دوسرا جیون اس نے مجھے دیا ہے کہ میں اس کے نام میں جیوں, اس کا مقصد پورا کرنے کے لیے جیوں. اور میں خداوند کی بڑی شکر گزار اس بات کے لیے بھی ہوں کہ وہ مجھے بار بار موقع دیتا ہے کہ میں اس کے نام کی تمجید کروں اور اس کے نام کو اونچا کروں, نہ کہ جو میری پچھلی زندگی تھی وہ میرے لیے ایک مثال ہے, کیونکہ میں ایسے خاندان میں پیدا ہوئی جہاں پہ خدا نے مجھے بچپن ہی سے اس کام کے لیے تربیت دی ہے. اور یہ ہم سب کے لیے ہوتا ہے, ہم جہاں کہیں بھی پیدا ہوتے ہیں, پلتے بڑھتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, جن تجربات سے ہم گزرتے ہیں, جس زندگی کے پہناوے اور لباس اور زیبائش میں ہم پلتے بڑھتے ہیں, وہ ہمارے لیے ایک تجربہ ہوتا ہے. وہ ہمیں خدا تیاری دے رہا ہوتا ہے, تربیت کرتا ہے کہ ہم اس کے بڑے کاموں کے لیے تیار ہو جائیں. آمین. خداوند کی میں شکر گزار ہوں کہ ان ساری تکلیفوں سے جو ابھی بہنا نے ہمارے لیے آیات پڑھی ہیں, ان تکلیفوں سے میں گزری ہوں. وہ جو ہمارے لیے جتنی بھی, میرے لیے جتنی بھی پاتال کی رسیاں تھیں یا موت کے پھندے تھے, وہ سب مجھ میں میری زندگی میں گزرے ہیں. میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ میں چھوٹی عمر سے ہی, جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دنیا بنانے سے پیشتر ہی خدا نے کیا کر لیا, ہمیں چن لیا ہے. خداوند نے ہمیں چن لیا اپنے نام کے لیے, اپنے کام کے لیے, اپنا بدن بنانے کے لیے اور اپنی دلہن بنانے کے لیے, اس کا ایک حصہ بنانے کے لیے اس نے ہم سب کو چن لیا. اور یہی محبت جو خداوند یسوع مسیح نے مجھ پہ ظاہر کی جب میں خداوند میں آئی ہوں, تو آپ یقین کیجئے کہ میرا زندگی میں بھروسہ جو اٹھ چکا تھا وہ دوبارہ قائم ہونا شروع ہوا. میرے اندر سے نفرت, حسد, جتنے جسمانی کام تھے, according to the book of Galatians, جتنے بھی جسمانی کام, جھوٹ بولنا, دھوکہ دہی اور ہر طرح کا ناپاک کام جو پچھلی زندگی میں ہوتا رہا, اس میں سے خداوند نے مجھے نکالا اور اپنے پاک روح کے پھلوں میں اس نے میرے اندر وہ جتنی بھی پاک روح کے پھلوں کا جوس تھا وہ میرے اندر اتارا. You can understand what I'm trying to say, کیونکہ میرے اندر خدا نے اتنا جوش بھر دیا ہے کہ میں ایک ایک روح میں, ایک ایک جان میں خداوند کے پاک روح کا وہ جوس, وہ مکسر دیکھنا چاہتی ہوں کہ that is going to flow in every heart, mind and soul, and that is the water of living water Jesus was talking about, that whoever will believe in me will receive and will that flow, receive that is going to flow through his or her life. Whatever we say, خداوند کا وہ پانی, زندگی بخش پانی جو ہے, وہ اسی وقت وہ یہی کہنا چاہتا تھا کہ جب پاک روح کا پھل تمہارے اندر اترے گا تو تمہارے اندر سے زندگی کے پانی کی کیا جاری ہوں گی, ندیاں جاری ہو جائیں گی. وہ جب ندیاں میرے بہنوں اور بھائیوں جاری ہوتی ہیں, تو جو صحرا کا جتنا ڈرائی پن ہے, سوکھا پن ہے, جہاں پہ زمین کو پانی نہیں ملتا صحرا میں, وہ ندیاں اس کو تر و تازہ اور سیراب کرتی ہیں. میری زندگی میں یہی تھا اور میں شکر کرتی ہوں خداوند کا کہ اس نے مجھے سیراب کیا ہے میری زندگی کو. 1991 میں خداوند یسوع مسیح نے میری زندگی میں اپنی محبت کا بیج بویا. ایک دعائیا میٹنگ میں گئی, مجھے لے جایا گیا وہاں پہ. اس سے پہلے جو میری زندگی تھی وہ کچھ فرق تھی. سنی مسلم گھرانے سے میں ہوں, اور جب خداوند نے میری زندگی میں کام کرنا تھا تو اس نے عجیب طریقے سے میری زندگی سے بولنا شروع کیا. میں 6 مہینے کی تھی جب میرے ڈیڈی کی ڈیتھ ہوئی. وہ he was in the army, he passed away. اور میری امی والدہ 23 سال کی عمر کی تھی. ہم 4 بہن بھائی تھے جن کو ان کو پالنا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جس ملک سے ہم آئے ہیں وہاں پر یہ بات آسان نہیں ہے.
चाहे आप किसी भी अकीदे से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, it's not easy for a young mother to brought her infants, her children, in a way that they be protected, they be fed, they be well dressed up, they will be educated. It was a difficult time. And as I grew, I learned about my mother that she was a very patient woman. She was the champion because I didn't have any other sister. So she was my sister, she was my close friend, and she was my father also, because I had 3 brothers and my mother. But the way she brought us up, she poured her peace and her patience in me, and I saw her as my champion. I brought up by looking at her, how she dealt with these difficult situations, how she dealt with all the accusations and blames, how she dealt with her crushing her own desires and her own way of life. She was beautiful, she was tall. I don't know who am I on, actually. I'm not that good looking, but she was the beautiful woman in the house. And I am glad that I was brought up in that family. From my childhood, I saw my cousins, they were used to go to Christian school. And when I saw the Christian school, I attended because I was sent to that school also. I saw the words from the Bible written on the walls. And in that Christian school, I saw that the verses were written, they were in Urdu, which I understood, but I never saw that kind of writing, that kind of formation of the sentences, that kind of the wording that's straight, as soon as you look at them or read them, they will touch your soul, your heart, your mind, and it challenges you. My goodness, God Almighty, where I have been, I never saw these kind of formation of the words. And then it was a school assembly. 75% of students in that school were Muslims, and 25% Christian brothers, Christian sisters, because it was girls' school. In that school, what I learned, when the assembly is going on, it was first it was Muslims assembly, and then it was Christian assembly. In Muslim assembly, I was on the top of the list. I would read the Quranic verses, I will sing Naat, and I would like to take part in that. And my hair was very long, and I was famous for my hair, that this is a girl, she has a very long hair. Lower of my hips, even they were going. But it wasn't the appearance. I was very much famous having a white dupatta around me, and I was very orthodox Muslim. बहुत पक्की मुसलमान थी. लेकिन जब मैंने हर रोज अब 5 दिन आप खुदावंद यीशु मसीह की दुआए रब्बानी सुनते हैं, और आप कलाम में से भी बातें सुनते हैं, आप गीत भी सुनते हैं, जो ज़बूर हैं, जो गीत हैं, वो आपके दिल को छूने वाले हैं. और मुझे नहीं पता कि hundreds of students में से कितनी और students के दिलों को ये बातें छुई हैं. मेरे अंदर तो खुदावन ने काम करना शुरू कर दिया था. इन्हीं सब असेंबली को, टीचर्स को देखा, क्रिश्चियन टीचर्स को, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को, उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ. और उन्हीं में से एक फ्रेंड मेरी year 8 में से, जो कि खुदावन ने उसको चुन लिया था मेरे लिए, वो मेरे लिए अब तक वो मेरी दोस्त हैं. 1991 से. She is not 1991, जब से मैं स्कूल में थी, year 8 से हम लोग फ्रेंड हैं और अभी तक हम फ्रेंड हैं. मैं खुदावन की बड़ी शुक्रगुजार हूँ उसकी जिंदगी के लिए, उसकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए, उसकी जो पाकरू उसको इस्तेमाल करता है. हमने आयात पढ़ी हैं 18 ज़बूर से,
اے خداوند اے میری قوت میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. یہ محبت خدا نے میرے اندر میرے بچپن ہی سے ڈال دی. اور جب میں گھر جاتی تھی اسکول سے تو میں ہمیشہ سوچوں میں رہتی تھی. اپنے اسکول سے واک کر کے میں نے جب خداوند کو سمجھنا اور سوچنا شروع کیا تو یہ سوچیں میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی. گھر سے اسکول سے گھر تک جب آپ کو گلیوں میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے اپنے گھر تک پہنچنا ہے تو خداوند میرے ساتھ, مجھے ایسا لگتا تھا ایک میری طرف یسوع کھڑا جا رہا ہے میرے ساتھ اور دوسری طرف محمد میرے ساتھ چل رہا ہے. So it was both sides. You can understand what kind of conversation would go on in your mind when you are walking after attending the school, after attending the classes and lectures with your Christian sisters. And of course, lecturers are your Christian teachers. So I'm grateful that seed was sown in my life. محبت خداوند میری چٹان اور میرا کلا اور میرا چھڑانے والا ہے. اس نے پہلے ہی سے پلان بنا لیا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو چھڑا لینا ہے. ہمارے گھر میں آپ جانتے ہی ہیں, میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے گھر میں ایک مسیحی انسان آتا تھا جو ہمارے صفائی وغیرہ کرنے کے لیے, لیکن میں بڑی پریشان ہوتی تھی اس بات سے کہ وہ شخص آتا ہے, اس کی سفید پگڑی, سفید کپڑے, اس کے شلوار قمیض, اور وہ جب بیٹھتا ہے چائے کے پینے کے لیے وہ اپنا کپ, سلور کا کپ جو ہے وہ میری تائی کے گھر میں, کیونکہ ڈیڈی کے ڈیتھ کے بعد ہم لوگ اکٹھے رہ رہے تھے اپنے تایا کے گھر میں, تو وہ کپ کو اپنے دہلیز کے پاس, کچن کی دہلیز. Okay, what you do, you see the سو کچن کی دہلیز پہ وہ رکھ دیتا تھا کپ اپنا, اور اس کے بعد میری تائی اماں دور کارنر سے اٹھ کے آنا اور اس نے اپنی واکنگ سٹک کے ہک کے ساتھ اس کپ کو اپنے نزدیک لے کے آنا اور اس میں اب چائے انڈھیلنی اور اس کو اسی طریقے سے پش بیک کر دینا اس کی طرف. سو یہ پکچر میں آج تک نہیں بھولی, میں بھول نہیں سکتی کیونکہ اس نے مجھے بہت سکھایا. میں نے اپنی تائی اماں. No, you've unmuted. Did you unmute yourself? Yes. سو میں نے اپنی تائی اماں سے سوال کیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہم کچن میں بیٹھ کے چائے پانی کیوں نہیں پی سکتے, کھا پی سکتے. تو تائی اماں نے جواب دیا کہ وہ نہیں آ سکتے اس لیے کہ ان کو اجازت نہیں ہے. تو میں نے کہا کون اجازت نہیں دیتا انہیں, کہ ہم اجازت نہیں دیں گے اس کو اندر آنے کی. میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, تو کہنے لگی کہ کیونکہ وہ پاک نہیں ہے. تو میں نے پوچھا اچھا کیسے پاک نہیں ہے, وہ تو ہمارے گھر کی صفائی کرتے ہیں, ہمارے گھر کے اندر آتے ہیں, تو پھر پاک کیوں نہیں ہے وہ. تو کہنے لگی کہ یہ بات نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کرسچن ہیں, ان کی ناپاکی کی وجہ کیا ہے, وہ کرسچن ہیں. اینڈ یو کین امیجن کہ میرے اس سوال سے اور ان کے جواب سے میرے ذہن میں کیسے اور سوالات اٹھے ہوں گے. ان کی شخصیت کو دیکھ کے مجھے اتنا اچھا لگتا تھا. I loved him. And once I spoke to him and I said, مجھے آپ بتائیے کہ آپ کے بچے ہیں. میں ان کے پاس بیٹھی, میں نے سوالات کیے تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, وہ اسکول میں جاتی ہیں. تو میں نے اسکول کا نام پوچھا تو کہنے لگے, اسی اسکول کا نام انہوں نے لیا جس میں میں پڑھ رہی تھی. پھر انہوں نے کلاس کا نام بتایا تو کلاس کا پتا چلا کہ وہ میری ہی کلاس میں تھی. میرے 2 بیٹیاں ان کی جڑواں, وہ ایک میرے دائنے بیٹھتی تھی اور ایک میرے بائیں بیٹھتی تھی. اس سے میں اور زیادہ خوش ہوئی
میں شکر کرتی ہوں خداوند کا کہ میری وہ کنورسیشن ان کے ساتھ ہوئی. میں نے ان سے بتایا کہ وہ تو میرے ساتھ ہی بیٹھتی ہیں. اور میرا یہ سوال تھا میری تائی اماں سے کہ میرے کلاس میں جس کلاس میں ہوں وہاں پہ سب کرسچن ٹیچرز ہیں, سب کرسچن اسٹوڈنٹس ہیں, تو کیا میں ناپاک جگہ پہ مجھے آپ لوگ بھیجتے ہیں کہ میں اسٹڈی کروں؟ تو ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا, کیونکہ ان کی اپنی بیٹیاں بھی اسی اسکول سے پڑھ کے کوئی ہیڈ ٹیچر تھی, کوئی فیڈرل اسکول میں ہیڈ ٹیچر تھی, کوئی کالج میں ٹیچر تھی, اور کوئی اور اچھی جگہوں پہ ان کی 4 بیٹیوں نے وہیں پہ اسٹڈی کی. بتانا یہ چاہتی ہوں بہت سے سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کتنے بھی آپ سوال پوچھ لیں, جب خداوند کا پاک روح آپ mute, you now can listen and you can talk. The power of God is so present in Christian places, in Christian's life, that we cannot comprehend that. آپ اس اسکول میں انٹر ہو جاتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ وہ کس قسم کا اسکول تھا. I have this honor that I studied in that school. خداوند یسوع مسیح کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ جو بنیاد میری بنی میں اسی میں پلی بڑی, اور جب میں شادی ہو گئی اس کے بعد مجھے ضرورت پڑی کہ میں اب کسی ایسی چیز کو جاننا شروع کروں جو میری زندگی کو تبدیل کر دے. میری شادی جب ہوئی میں اس شخص کو جانتی نہیں تھی. He was my first cousin and he never been to school. اور جس عمر میں میری شادی ہوئی 19 سال کی میری عمر تھی, اور اس شادی میں سے میرے 3 بچے پیدا ہوئے. چھوٹے بچے تھے جب ان کی تینوں کی ڈیتھ ہو گئی, one after another. تو losing children as a mother, it wasn't easy. It was not a easy life that you are living. بچپن کی جو ٹیچنگ تھی وہ میرے دماغ میں رہتی تھی, میرا پیچھا کرتی تھی. اینڈ میں ہر وقت میں خدا کو جاننا چاہتی تھی, اللہ سے پوچھتی تھی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جب میرے بچے مجھ سے چلے گئے اور میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا, بیکاز آف دیٹ مجھے یہ پتا چلتا تھا کہ میں نے کوئی ضرور بڑا گناہ کیا ہے جو میری زندگی میں کوئی کسی قسم کی خوشی نہیں ہے. My friends, it was all God's plan, and I give glory to him that he took my 3 children away so I could understand what kind of love he is carrying in him for me and for my future. میں خداوند کی بڑی شکر گزار ہوں. بہت سی باتیں ہوئیں. 91 میں نے خداوند یسوع مسیح کو زندگی دی, اور آج تک خداوند کو میں اسی طرح پیار کرتی ہوں جیسے مجھے کرنا چاہیے. It's a passion of Christ in me that does not let me go. خداوند نے ہم سب کو چنا ہے, ہم کتنی ہی مشکلوں میں سے کیوں نہ نکلے ہوں, کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ ہوں, جو خداوند کا مقصد ہے وہ آپ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. He is going to carry you, taking you to the high places where you need to be. خداوند کی اپوائنٹ کی ہوئی چیزیں, اپوائنٹ کی ہوئی places, he is not going to let you go until you receive those blessings. اسی لیے میں نے یہ جو 18 زبور پڑھا ہے, it says میری سپر اور خداوند میری چٹان اور میرا کلہ اور میرا چھڑانے والا ہے, میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا. اس پہ بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے. فرمایا میری سپر اور میری نجات کا سینگ, میرا اونچا برج.
He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold. And he says, I will call upon the Lord who is worthy to be praised. Worthy to be praised. So shall I be saved from my enemy, the pangs of death. मुझे ऐसा लगता था जैसे बच्चों को की पैदाइश के बाद जितनी भी खिदमत की है वो दोबारा मेरे लिए बर्थ पैंग बन के मुझे लौटाई जा रही है. मुझे वो पेन खत्म नहीं हो रहा, मेरा बर्थ पेन. और जब हम अनगॉडलीनेस अराउंड आपके हर वक्त हो और आप ये सीखना चाहें कि इस झूठ को कैसे बोलना है और इस सच को कैसे डिमोलिश करना है, वो बहुत तकलीफ दे सफर होता है. जब मैंने खुदा में यसु मसीह को लिए मैंने एक जगह मुझे ले जाया गया दुआ के लिए, तो मुझे उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि मैं आपसे जो अभी मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ भाई हारून के लिए जिन्होंने ये हमें लीड किया कम्युनियन में, क्योंकि जिस दिन मुझे दुआ के लिए लेके जाना था मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि we are going to go to prayer and I said I'm not going to go to prayers. क्या यस्सु कर सकता है जो मोहम्मद नहीं कर सकता? मोहम्मद में भी उतनी ही ताकत है बल्कि उससे बढ़ के है. सो मेरे दोस्त ने कहा कि you will see, you will get the answers. क्योंकि मेरे मन में बहुत से सवाल थे as a Muslim. इसी तरह आज भी मुसलमानों के दिलों में बहुत से सवालात हैं. वो हमारे मुंतजिर हैं कि हम उन तक खुदा का कलाम लेके जाएं. वो मुंतजिर हैं. खुदा ने हर एक बहन भाई के लिए पोर्शन मुकर्रर कर दिया है कि इतनी रूहें आपकी निजात का फल हैं. आपको जो निजात मिली है, that is going to be any soul you are going to save, that is going to be the fruit of your salvation. So बहनों और भाइयों तैयार हो जाओ. आपने अब तक जितना बीज बोया है उसको जो पानी दिया है दुआएं कर करके, वो आपकी निजात का फल होगा. आपकी पर्सनल निजात का फल खुदा की हजूर में जब हम फलों की ईद, हम ईदें उस दिन सीख रहे थे, फलों की जो ईद है वो हमारा फल जो है वो खुदा के हजूर में होगा और काबिल कबूल होगा. मैंने कुरान को पढ़ा, मैंने अल्लाह से सवालात किए, मैंने मोहम्मद से सवालात किए, मैंने बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि वो जिसको मैं पूजती हूँ, जिसके लिए मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, what is the outcome for my personal life? Because there is no salvation in any way, in any level, in any degree, in any measure of my good deeds. There was nothing. और मरने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है. हमने सीखा कि जहन्नुम की आग जो है वो सिर्फ औरतों के लिए तैयार की गई है, और ये आज भी यही टीचिंग है. आप किसी भी फिरका में चले जाएं इस्लाम के, बहुत से फिरके हैं, लेकिन मेन जो हैं सुन्नी और शिया, और सुन्नी, शिया, कादियानी, अहमदी, उनकी आगे क्लासेस हैं सिपा साहबा, इस्लामिक जमीयत. हर एक के अपने लेवल्स हैं, हर एक ने अपना कुरान बना रखा है, कुरान मजीद बनाया है, उसकी टीचिंग डिफरेंट है. तो एज मैं ग्रो हो रही थी, मैं आपको बताती हूँ अपनी टेस्टमनी. जब बिफोर आई वेंट फॉर माय
for my first prayer. मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि जितनी भी तालीम आप हासिल कर सकते हैं कलाम मुकद्दस से, उसको जरूर हासिल कीजिए, क्योंकि आपको हर लेयर पे जितने भी सवालात के जवाब देने हैं वो आपके कलाम में मौजूद हैं। आप सबका, हम सबका कलाम को जानना बहुत जरूरी है। मैंने जब सवाल अपनी दोस्त से किया तो उसने कहा कि तुझे सारों सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और मैंने उससे फिर कहा कि I don't want to know afterwards, I want to know now. One question is कि आप हर हफ्ते अपना ईमान खो देते हो. You lose your faith and the strength of faith every week. It was a very, very bold statement I made. And she was smiling and she said, okay, tell me. So I said to her, कि हर संडे को आप चर्च जाते हो, and you break the bread and you take the wine and you pray and you come back and you commit sin all week, and then you every Sunday you go back to your church, you break the bread, you take the wine, and you renew your faith with God again and again. Can you see how that question came out? खुदावन ने मेरी जुबान को पूरे तौर पे कंट्रोल कर रखा था कि मैंने खुदावन यीशु मसीह के लहू की इंसल्ट नहीं की, कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकला मेरे मुंह से कोई ऐसी बात उसके बदन के लिए नहीं निकली जो इंसल्टिंग होती या डिसऑनरिंग होती। मेरे मुंह से जो सवाल जेन्युइन क्वेश्चन था वो निकला, और उसने मुझे जवाब दिया that you will know all about that. Why do we do that? I said, you tell me now. I want to understand. You see, we go as Muslims to Makkah and we perform Hajj, and for the whole month we keep ourselves washing and cleaning or whatever we do in Hajj. By the way, I never been to Makkah and never done that. But that was my example. We do that for the whole month, and for 11 months, yippee, we are free. We can do whatever we like because we have spent a whole month in that holy place, doing all holy things, and we come back and we are fine. We don't have to go every week to take the bread and to take the wine. That was my question, and she said, you will get all the answers. So my friends, I actually made a plan to give my testimony for 20 minutes and 20 minutes for the message, and it's 40 minutes now. Yes? Thank you very much. Please, you continue. Thank you. So my question to her was, why is it? Is that Jesus is more powerful than the person I follow? And that was the questions that ask. You have to be ready to answer those questions, my friends. You have to know your word so thoroughly if you want to win the soul, and if you want to win them for good, not to drag them to the church, not to have a good time and fun time, or come into the good books that, wow, look, I am going and I'm talking to Muslim and I am sowing the seed and all kind of things. My friends, it's a very sensitive, very delicate, and very powerful act of your faith that you take step by step
You learn as you go and you teach as you go. For that, you have to be very careful. Not only with only one nation I'm talking about Hinduism, Sikhism, and all others. Why do I need to tell you that? Because can you please read for me Isaiah chapter 42, verse from 5, please. Thank you. Isaiah, book of Isaiah, chapter 42, verses from 5 to 9. Thank you. 5 to 9, yes. जिसने आसमान को पैदा किया और तान दिया, जिसने जमीन को और उनको जो उसमें से निकलते हैं फैलाया, जो उसके बाशिंदों को सांस और उस पर चलने वालों को रूह अनायत करता है, यानी खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, मैं खुदावंद ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा कि तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैदखाना से छुड़ाए। यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवाना रखूंगा। देखो पुरानी बातें पूरी हो गई और मैं नई बातें बताता हूं, इससे पेशतर के वाक्या हूं मैं तुमसे बयान करता हूं। आमीन। हालेलुया। Amen. 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 That is my Markazi message, that we are chosen. खुदा ने कहा है कि मैंने तुझे सदाकत से बुलाया है, in the righteousness. और जब उसने सदाकत से बुलाया है और उसने कहा कि मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा, मैं लिखा है लोगों के अहद और कौमों के लिए नूर के लिए तुझे दूंगा, which means in many other translations in English when we see, it says that I have made you a covenant for people and a light to the Gentiles. Covenant to the people means for Israels. इसराइलियों के लिए तुझे मैंने अहद बना दिया है और जेंटाइल्स के लिए, बाकी कौमों के लिए तुझे मैंने नूर बना दिया है, रोशनी बना दी है। इसका समझना और सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहता है कि पुरानी चीजें खत्म हो गई, अब जो नई चीजें होने वाली हैं वो मैं तुझसे बयान करता हूं, उसके लिए तू तैयार हो जा। सो जब भी हम खुदावन में आते हैं, नई चीजें वाकया होती हैं, हमारी पर्सनैलिटी बदल जाती है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग बदल जाता है, हमारा अंदाज़े बयान, हमारा रिसीव करना खुदा का कलाम और किसी की बात को, वो अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। मेरे अंदर जितनी भी नफरत थी, जितनी भी जेलसी थी, जितनी भी मेरे अंदर लालच था, झूठ बोलना, डिसेप्शन, everything which is not of God was filled in me. It was gone in the name of Jesus when I prayed. So a friend of mine, she took me to the prayer meeting. I said to her on the day when I questioned her all these questions about the emblem of the communion, and I talked to her about the why you guys do what you do every week. तुम्हारा ईमान कमजोर पड़ जाता है, तुम्हारी
तुम्हारी शख्सियत बदल जाती है एक हफ्ते में, जो आके तुमने दोबारा रिन्यू करना होता है। तो जवाब यही था। वो मुस्कुराते हुए, आप ये देखिए, उस लड़की ने 20 साल मेरे लिए दुआ की, तब मैं इस मौका तक पहुंची कि मैं खुदावंद को अपनी जिंदगी दे सकूं। स्कूल से लेके मेरी शादी के बाद हमने बिजनेस शुरू किया, स्कूल वगैरह शुरू किया, उसको खत्म, उस दौरान में मैंने खुदावंद को जिंदगी दी। उस दौरान मुझे पाक रूह का बपतिस्मा हुआ, पाक रूह का आग का बपतिस्मा। हम आग की बात कर रहे थे, कल आपने मैसेज दिया है, बहना दे रही थी। और बाकी जब आग का बपतिस्मा आपका हो जाए तो मेरे बहनों और भाइयों, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आप सच्चाई को बयान करें। आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती कि आप सच्चाई को जान के दूसरों तक ना पहुंचाएं। Is powerful, is absolutely unmissable. You cannot deny the power of God. The word of God has its own authority, its own power that works in you, penetrates in your personality. और यही कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आपके जोड़ जोड़ और बंद बंद में उतर जाता है। और जब आपकी रगों में खुदा का कलाम उतर जाए, आपकी जोड़ों में कलाम उतरना शुरू हो जाए, तो मेरे बहनों और भाइयों, हर तरह की नापाकी, हर तरह का झूठ, हर तरह की डिसेप्शन, हर तरह का लालच, हर तरह की वो चीज जो खुदा की तरफ से नहीं है, it just goes, it just vanishes. और मेरे अंदर slowly, and it doesn't happen all at once, it takes time. लेकिन जो भी तब्दीली आपके अंदर आना शुरू होती है, वो वक्त लेती है। और ऐसे लगता है कि आपके पास से बहुत सी अजीज चीज आपकी खो गई, आपका लालच आपके अंदर से खत्म हो गया, ऐसे लगता है वो जगह खाली हो गई, अब पता नहीं कैसे मैं उसको भरूंगी। लेकिन पाक रूह उसी वक्त आपके अंदर आके उस जगह को क्या करते हैं, भर देते हैं। वो जख्म नहीं रहता कि मेरी अपने अंदर की एक चीज मुझसे जुदा हो गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब दरख्त की शाखों को काटा जाता है, जो सूख जाती हैं, सूखी शाख को तकलीफ नहीं होती, किसको तकलीफ होती है, जिससे वो जुदा हो जाए। वो हरी शाख को तकलीफ होती है, वो सूखी शाख जो अलग की जाती है उसको तकलीफ नहीं होती। The imputation that मेरी नर्सिस बहन भाई समझते होंगे, जब हमारा जिस्म का हिस्सा कटता है, तो वो हिस्सा जब हमारा कटता है, जो हिस्सा कट गया है उसमें जान नहीं है, उसमें जिंदगी नहीं है, लेकिन उस हिस्से, बदन के हिस्से को तकलीफ होती है जिसमें जान है। यही चीज होती थी। जो हमारे अंदर मुर्दा काम है, जब वो जुदा होते हैं हमसे, हम उनको जाने नहीं देते, पकड़े रखने की कोशिश रखते हैं, तो वो जब खुदावंद का पाक रूह उनको हमसे जुदा करता है, हमें इजाजत देना पड़ती है कि खुदावंद का पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम करे। इस्लाम का रूह यूं ही नहीं छोड़ता। You have to fight. You have to be on the side of Jesus Christ, Father, Son, and Holy Spirit, and you. That is the church. That is the body of Christ. That's what I learned when I was going through the persecution. चर्च जा नहीं सकती थी, बाइबल पढ़ नहीं सकती थी। खुदावन ने सिखाया। मेरे पास कुछ लोग पूछने के लिए आए कि कैसे आप खुदावन में आ गई और आप किस चर्च में जाती हैं, तो मेरे पास जवाब नहीं था चर्च जाने का कि मैं किस चर्च में जाती हूँ। मेरा जवाब ये था, मैं हर चर्च में जाती हूँ। Every person who says that Jesus Christ is the Lord is my brother and sister. That is my church. Amen. And God taught me what to answer to those brothers who came to ask me. They wanted to write books and they wanted to have some, as you know, that what happens when one person comes out from that background. हमारे बहन भाई चाहते हैं कि वो उनके बारे में कुछ लिखें और उनसे कुछ हिदायत लें या तालीम लें या कुछ भी आप समझ लें। लेकिन जब मैंने खुदावन से दुआ की, मैंने कहा खुदावन मैं इनको क्या जवाब दूं कि मैं किस चर्च में जाती हूँ।
तो खुदावंद के पाक रूह ने क्लियरली मुझे बताया कि मैंने क्या जवाब देना है। सो मैंने उनसे कहा कि मेरे भाइयों, आप भी उस चर्च के चौथे मेंबर बन सकते हो, आप पांचवें नहीं होंगे। It's a Father, Son and Holy Spirit and you. That is the church. That's what I learned at that time, and I am a member of that church. I'm grateful to the Lord. Amen. जब हाँ मैंने खुदा मैं बहन अपनी के साथ वहां पे चर्च में गई, उनके दुआया ग्रुप में गई, उससे पहले मैंने उससे वादा लिया। मैंने कहा आज के बाद ये बातें जो हुई हैं इनका जवाब पाने के लिए मैं तेरे से बाद में पूछूंगी, लेकिन आज के बाद आज मैं चली जाती हूँ तेरे साथ, इसके बाद मैंने कभी मुझे तू मजबूर मत करना जाने के लिए, neither for church nor for the prayer meetings. And she says fine, that's okay, you come now. क्योंकि वो जानती थी कि मैं क्या हरकतें करती फिर पीरों फकीरों के पास जाना, जितना रुपया पैसा कमाना, मैंने 10,000 महीने के in 80s we are talking about, तो वो सारे पैसे पीरों फकीरों को और जाने, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे वो ताकत और वो मोहब्बत मुझे दोबारा मिले जो मैंने खो दी थी by losing my children and my family. उसने वादा कर लिया कि इसके बाद वो मुझे लेके नहीं जाएगी, and lo and behold I went. And there I saw, जमीन पे जब बैठ के पास्टर साहब दुआ कर रहे हों और उनकी कलीसिया भी जमीन पे उनके साथ बैठी हो, तो कैसा तस्वीर लगता है आपको, कैसी तस्वीर मिलती है? मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं किसी मुस्लिम पीर के घर में आई हूँ और उनके सारे जो जितने चेले हैं वो जमीन पे बैठे हैं। तो मैंने कहा खुदाया ते मैं सारा कुछ वेख्या है, why did you bring me here? And she says, you come, let's sit down. And pastor साहब बैठे हैं जमीन पे, और मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि pastor साहिबान जमीन पे बैठ के अपनी कलीसिया के साथ उन्हीं की तरह बैठ के दुआ में और कलाम में मसरूफ हैं। So जब उन्होंने मुझे देखा और मुझे मेरी दोस्त ने बताया कि my friend needs prayer and she got this problem, and he says, don't tell me, I know about her everything. And that was the first antenna just ping in my head. How does he know that? How does he know about me? She never said that. She never mentioned to him about me. Now I know it was the Holy Spirit. When my brothers prophesy, Bhai Harun and Bhai Kamran and other brothers, when you are prophesying and you're speaking the word, you know what you are talking about. And you know you have received from the God Almighty directly. He is speaking to you. So that's what happened with me. And now I know. At that time, उस वक्त मैंने उनसे पूछा, अच्छा मेरी दोस्त ने बताया होगा, तो कहते हैं कि मुझे पता है, आप बैठ जाइए। So मैं बैठ के उनके साथ, भाई ने जब मेरे लिए दुआ की, पास्टर साहब ने, जो मैं उनको अपने दिल से बड़ी इज्जत देती हूँ और मैंने उनको अपनी माँ कहा है, he is my spiritual mother. और शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि उस स्पिरिचुअल माँ ने मुझे वाकई माँ की तरह पाला है। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब हम सीड को सो कर देते हैं, जब हम उसे जमीन में बो देते हैं, तो उसको पानी कैसे देना है, उसकी रखवाली कैसे करनी है, उसके जो शूट्स निकलते हैं, स्टेम्स निकलते हैं, उनकी कैसे लुक आफ्टर करनी है, धूप से बचाना है, बारिश से बचाना है, आंधी हवाओं से बचाना है, कैसे उसकी exactly the same is when you are sowing the seed of faith in anybody's life. You have to be so careful. You have to be so attentive. You have to be so alert that enemy does not come and steal and destroy and kill that seed from that person's life. Then it comes to your responsibility that how you are going to keep that soul on your God's hands. Amen. It's very big responsibility. So that's what he was doing. So, but I asked him, he prayed for me, he put his hand on my shoulder and he said, Lord Jesus Christ,
pour your peace in your daughter's heart. And that's all. That was it. मैंने महसूस किया मेरे बहनों और भाइयों कि मेरे कंधे से बोझ हल्का हो गया है, मेरी आंखों से छिलके उतर गए हैं, मेरे जो बंद कान थे वो खुल गए, और खुदावन ने कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी की हजूरी में, मेरे अंदर इतनी इज्जत और एहतराम और अदब बढ़ना शुरू हो गया उस जगह का, क्योंकि वहां पे सब लगता था कि पाक रुका मसा है। मेरी सिर्फ एक ही मैं बस थोड़ा सा ही बोलूंगी, उसके बाद मैं बंद करूंगी, फिर कभी मुझे मौका दिया आपने तो हम कैरी ऑन करेंगे। मैंने उनसे एक ही सवाल किया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक और पीर हैं जिनको मैंने अब पैसे देने हैं क्योंकि उन्होंने मेरे लिए दुआ की है। So I offered him, how much shall I pay you? And he smiled and he said, dear sister, your price has been paid. आपकी कीमत अदा हो चुकी है। और मैंने उससे कहा, मैं आपसे इस दुआ के पैसे किसने पे किए हैं? मेरी ये पैसे किसने पे किए हैं? मेरी दोस्त ने तो अभी तक कोई अपना पर्स नहीं खोला, मैंने देखा उसने आपको कुछ नहीं दिया। तो मुझे कहने लगे ये यीशु मसीह है जिन्होंने आपकी कीमत अदा की है। तो मैंने उनसे कहा कि ये वही यीशु मसीह हैं जो कुरान में हजरत ईसा के नाम से जाने जाते हैं और उनका जिक्र है। तो उन्होंने कहा कि yes, if you want to understand in that way, क्योंकि मैं जानती हूँ, अब मैं जानती हूँ कि हजरत ईसा और यीशु मसीह, they are absolutely different people. Jesus is the living God. Jesus is the Savior. Jesus is the Redeemer, not Hazrat Isa. It's Jesus. It's the power of the name of Jesus that redeems you from the darkness and brings you into the light. You know, the threshold between the sin and the righteousness, you have to cross from the sin, from that threshold through, you have to cross the door of unrighteousness and step into the righteousness. And that brings you to the understanding that who is calling you into the light is only Jesus can do. So जब मैंने उनसे पूछा कि वो कहने लगे कि हाँ अभी तो ये ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि हजरत ईसा ही है, क्योंकि मेंशन ही वही है. Because we have to, I learned, we have to be very careful. If whatever the knowledge they have, you have to go along with that. But you know that what the answer you have, there is no one in the heavenly realms, in the whole universe, on earth, there is no other answer, the answer you know, and that is Jesus Christ. Amen. That's the power you have. Do not be discouraged, my sister, my brother, whatever the age you are, whatever the background you have. Once you are called by Jesus Christ, then you are right in the deep end of the sea that you are going to catch the fish. Because it's Jesus is going to do through you and with you. When I asked him, his answer was that, and I said, okay, when did he pay you the price you are talking about? And he says, 2,000 years ago. And I said, 2,000, are you joking? Aap mazak kar rahe hain? And he says, I'm not joking. He paid for you 2,000 years ago. And I said, okay, that is a bit difficult to understand or believe. तो मैंने कहा कि कितनी पे किया उन्होंने आपको, ताकि मैं आपको भी दूं. और पहले मैंने उनसे ये पूछा कि how did he pay you? And he says,
he paid. I said, did he pay you with cash or with a credit card, or how did he give you? And he said he paid by his life on the cross. And I said, how is it possible for this one sentence? Father, pour your peace in your daughter's heart. How can he pay with his life for just this one sentence? An answer was spiritually and very wise. He said, he did not pay for this sentence. He paid for you, for your life, not for this sentence. So my friends, that broke my heart. And I said, how much did he pay? And he says, he says, he died for you on the cross. I said, why did he do that? He does not know my name. He doesn't know me at all. He does not know what I've been through. I don't know him personally. Who is this guy who died for me on the cross? And he says, he knows your name, my darling, and he knows what you've been through. And that's why he died for you on the cross. And I said, 2000 years ago, he died for my pain and grief. Now I am getting to know that. And he says, yes. And I said, okay, last question, please answer. Why did he do that? And that question is to you too. Why did he do that? Why did he die for you, all my brothers and sisters? Why did he do that? I wasn't good enough. I wasn't doing any good deeds at all. And the answer came because he loves you. Not he loved you, not he will love you, but he loves you continuously, every day, all the time. He never stops, never sleeps, never slumbers, never stops. His love never runs dry. Amen. Then after that is a time I need to finish that. Persecution started afterwards. It's a long story, but I'm glad, my friends, that I am baptized in the water. Before I got baptized in the water, I was baptized in the Holy Spirit, fully baptized in the fire, fully baptized in the water afterwards, after a year. And I am so glad that I'm out of that darkness. There is a very, very long story. The persecution level was very high. Then the devil came along and I had a fight with him face to face all night. And in the morning, because I'm still alive, I'm in front of you now. You can see me, living creature, sitting, talking to you and telling you about the story. When I went in the morning, I spoke to my pastor and I said, well, that's what happened and I'm not going to believe in Christ anymore. And he smiled and laughed and he said, we have been praying for you. You are victorious and you are glorious. Never, ever, enemy, devil, the Lucifer will come near you and he will give you any harm. So I'm grateful to the Lord because the fight I had with him, it happened a lot of things, that story is for another time. And I give glory to the Lord Jesus Christ that he has chosen all of us. He says, you did not choose me, I have chosen you and appointed you to bear the fruit that will last. Not for one day, not for 2 days, to last. So the souls we need to save is all in our own hands. Where do we, from out of our bag of seeds, where do we want to sow? Not in the stony place, not in a place where it's sandy, but the place where it's near the water, where you can water with your prayers and with the word of God and with the teaching how to pray in the name of Jesus. Amen.
I'm afraid that I have taken too much of time of yours. I give glory to the Lord Jesus Christ for this platform, and may the Lord bless every single person who shares, the directors, the executives, and the people who are actually taking part in that. And this platform is going to grow. It says, enlarge your territory, enlarge your tent pegs, get ready, because you will have no place on this media that the people will be so many that are going to connect with you. And may the God bless you richly, deeply, and highly. May the Lord give you the authority of putting on all the armor of God every day upon you and upon your channel, so you can fight against the darkness, fight against the power and the authority of darkness and bondage, spiritual bondages. May the Lord use you mightily, rule and reign in your lives. May he empower you, strengthen you to be used for his glory and for his namesake. Building the kingdom, not the enterprise for yourself, but the kingdom of God that is going to grow and is going to take place here in this country and in abroad, in many, many countries. Amen.